Hello students, in today's video we are going to solve second unsolved question of our BK textbook, chapter number 4, retirement of partner. Let me start question number 2, page number 184. First of all, we will read the question. The balance sheet of Ram, Sham and Ganesham sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Now three partners are given in this question: Ram, Sham and Ganesham. Okay, and all these three partners were sharing their profits and losses in the ratio of 3:2:1. Okay, so 3:2:1 is their old profit sharing ratio. Okay, so old ratio उनका क्या होगा? 3/6, 2/6 and 1/6 for all three partners. Balance sheet as on 31st March 2019 is given below. Now we will make marking to the balance sheet. First, liability side, capital account of Ram, Sham and Ganesham. Capital will be transferred to capital account credit side. So here we will write capital account क्रेडिट. ओके, तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग आपको करना है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ओके, देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन, ऑल दीज आर लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस. सो creditors, bills payable and loan will be transferred to new balance sheet. Okay, so here we will write L for creditor, L for bills payable and L for loan. Okay, L means liability. Now assets, bank balance, it will be transferred to asset side. Debtor, asset. Building is also asset. Investment is asset. Okay. Now Ganesham retired on 1st April 2019. Retiring partner is Ganesham. Okay. So continuing partner will be Ram and Sham. Okay. Ganesham retired on 1st April 2019 on the following terms. Okay. Building and investment to be appreciated by 5% and 10% respectively. Okay, now there is adjustment on building and investment, so we will give number 1 to the building and investment. Okay, adjustment number 2, provision for doubtful debt, that means RDD, to be created at 5% on debtor. Okay, so adjustment number 2 is related with RDD on debtor. So we will give number 2 to the debtors. Adjustment number 3, the provision of rupees 3,000 be made in respect of outstanding salary. Okay, now here we have to make provision of rupees 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी को पेड करने के लिए हमें 3,000 रुपीज का क्या करना है? प्रोविजन करना है. ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म. फर्म मीन्स गुडविल ऑफ द ऑल पार्टनर्स, गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म is to be valued at rupees 90,000. ओके, नाउ दिस इज गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, मतलब पूरे फर्म का गुडविल क्या हो चुका है? रेज हो चुका है. Okay, by rupees 90,000. Partners decide that goodwill should be returned back. Okay, now first of all we have valued the goodwill, we have raised the goodwill. Okay, पहले पार्टनर का गुडविल हमने रेज किया है and after that goodwill is written off. Okay, so this is case number 2. What is case number 2 of goodwill? गुडविल के वैल्यूएशन का या गुडविल के ट्रीटमेंट का सेकंड केस क्या होता है? When goodwill of the entire firm is raised and it is written off. पहले हमने गुडविल को रेज किया, पूरे फर्म के गुडविल को रेज किया है, वैल्यूड किया है और उसके बाद हमने उसे राइट ऑफ किया है, रिटर्न ऑफ किया है इन बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर. ओके, ओके, सो दिस इज केस नंबर 2. हियर वी विल मेंशन केस 2 ऑफ गुडविल. ओके, नाउ adjustment number 5, the amount payable to retiring partner to be transferred to his loan account. The adjustment number 5 is related with settlement of account of retiring partner or payment of amount due to the retiring partner. Now whatever amount due to retiring partner, who is retiring partner? Ganesham, will be transferred to his loan account. Okay,
So these are 5 adjustments which are given in this question. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of the new firm. Okay. Now here we have to prepare 3 things. First is profit and loss adjustment account. Thereafter we have to prepare partners capital account, and below that we have to prepare balance sheet of new firm or balance sheet of continuing partner, and it will be on 1st April 2019 because Ghanshyam is getting retired on 1st April 2019. Okay. So let we start with solving this question. First of all, we will read the adjustment. We will solve all adjustment. Adjustment number 1. Ghanshyam retired on 1st April 2019 on the following terms. Building and investment to be appreciated by 5% and 10% respectively. Now both assets are appreciated. दोनों asset की value appreciate हो रही है, बढ़ रही है. Okay. So first of all, we will show that effect in asset side. First is building. Now old value of building was rupees 60,000. And it is appreciated by 5%. बिल्डिंग की वैल्यू 5% से appreciate हो रही है, बढ़ रही है. Okay, so we will add it. So here we will write add 5% appreciation. 60,000 into 5%, it will be 3,000. So in outer column we will write 60,000 plus 3,000, 63,000. Next is there is appreciation on investment by 10%. Okay. So here we will write investment now amount of investment is 1,50,000. It is appreciated by 10%. Okay, so appreciation हम add करेंगे. So add appreciation 10%. 1,50,000 plus 10%, it will become 15,000. 1,50,000 का आपको 10% कैलकुलेट करके मिलेगा 15,000. Okay. So in outer column we will write 1,65,000. Okay. Now both assets are appreciated. पहला इफेक्ट हमने दे दिया, हमने appreciation ऐड किया है. Now it is profit for a business if assets or value of asset increases or it is appreciate, then it will be the profit of the business. Okay, asset की value अगर बढ़ती है तो वो हमारी business का profit है. Okay. So second effect we will show in profit and loss adjustment account credit side. So in credit side we will write by building account amount is 3,000 by investment account amount is 15,000. Okay. Now adjustment number second, provision for doubtful debt to be created at 5% on debtor. Now here we have to create 5% provision for doubtful debt. That means we have to create reserve for doubtful debt or RDD on debtor. Okay. So first effect of RDD will be less from sundry debtor. RDD को हम debtor से less करेंगे, minus करेंगे. So here we will write debtors. Amount of sundry debtor is given 90,000. RDD will be 5%. So less 5% RDD. Provision for doubtful debt 90,000 minus 5%, it will be 4,500. So in outer column we will write
85,500. Okay. Now RDD is a loss for a business. Business के लिए ये loss है. Okay. And the effect of RDD of rupees 4,500. Second effect we will show in profit and loss adjustment account debit side. Okay. So here we will write 2 RDD account amount is 4,500. Okay. Next, goodwill of the adjustment number 3, the provision of rupees 3,000 be made in respect of outstanding salary. Okay. Now here we have to make provision of 5,000 rupees in respect of outstanding सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी को पेड करने के लिए हमें 5,000 रुपीज का क्या करना होगा, प्रोविजन करना होगा. सो इट विल इंक्रीज अवर एक्सपेंडिचर. उसके कारण हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. 5,000 से हमारा खर्चा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ओके. एंड इट विल बी द लायबिलिटी. ओके. बिकॉज एनी टाइप ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर का अगर हम प्रोविजन करते हैं तो वो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है. ओके. सो फर्स्ट इफेक्ट वी विल शो इन लायबिलिटी साइड. हियर वी विल राइट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, provision for outstanding salary amount is 3,000 rupees. Okay. Now this is our liability. Now second effect we will show in profit and loss adjustment account debit side. क्योंकि हमारा खर्चा 5,000 रुपीज से अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने 5,000 रुपीज का प्रोविजन किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए. ओके. सो we will record our expenditure in profit and loss adjustment account debit side. So here we will write 2 provision for outstanding salary account. Amount is 3,000. Adjustment number 4, the goodwill of the firm. Firm means entire firm. सभी पार्टनर का गुडविल हमें दिया है. It is valued at rupees 90,000. Okay. Now it means goodwill of the entire firm is raised. पूरे फर्म का गुडविल 90,000 से क्या हो गया है, रेज हो चुका है. Okay. And then partners decided that goodwill should be returned back. Okay. पहले तो हमने गुडविल को रेज किया है और उसके बाद हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं. ओके. सो दिस इज केस नंबर 2 ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ओके. सो हियर वी हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज. पहले तो हमें फर्म का गुडविल रेज करने का जर्नल एंट्री पास करना है. एंड सेकेंड जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल. बाद में हमें गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर में क्या करना है, राइट ऑफ करना है. ओके. सो हियर वी विल पास 2 जर्नल एंट्रीज. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we'll write here working note number 1. Working note number 1, when goodwill of entire firm, goodwill of entire firm is रेज. पहले तो हम रेज कर रहे हैं, गुडविल को वैल्यूड कर रहे हैं. एंड देन रिटर्न ऑफ. रेज करके हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर में रिटर्न ऑफ कर रहे हैं. ओके. सो हियर वी हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट वी हैव टू रेज द गुडविल ऑफ द फर्म, उसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. एंड देन गुडविल को हमें क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में राइट ऑफ करना है. ओके. So our first journal entry is, पहले हम गुडविल को क्या करेंगे, रेज करेंगे. फर्म की गुडविल रेज होगी, सभी पार्टनर का गुडविल रेज होगा.
So journal entry will be goodwill account debit to all partners capital account. All partner means ओल्ड पार्टनर्स, तीनों पार्टनर को हमें गुडविल रेज करके देना है, राम श्याम एंड घनश्याम. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर मीन्स टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट and to Ghanashyam's capital account. Ghanashyam's capital account. Okay. Now we have raised the goodwill for rupees 90,000. हमें पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यू दिया है 90,000 जिसे हमने रेज किया है. वैल्यूड मीन रेज. ओके. सो गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000. Now in केस नंबर 2, ओके, जब हम गुडविल को रेज करेंगे तीनों पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में, सो हमें कौन सा रेशियो यूज करना है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ये गुडविल क्या करनी है? रेज करनी है. ओके, सो हियर वी विल यूज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इन ओल्ड रेशियो दैट गुडविल विल बी रेज. ओल्ड रेशियो इज 3:2:1. सो old ratio is given 3:2:1. Okay, now we will raise the goodwill between three partners. First partner is Ram, Shyam and Ghanashyam. Amount of goodwill is 90,000. Okay. तीनों पार्टनर में हम गुडविल को रेज करेंगे. इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 and 1/6 for Ghanashyam. So 6 ones are 6. 45,000. Again 30,000 and 15,000. So as per old ratio, goodwill raised for Ram is 45,000. For Shyam, it is 30,000. And for Ghanashyam, it is 15,000. ओके, तीनों पार्टनर के बीच में हमने गुडविल क्या कर दी? रेज कर दी है. ओके. Now we will write off goodwill between continuing partner. अब हम continuing partner को goodwill क्या करेंगे? Write off कर देंगे. Okay. So second journal entry will be continuing partners capital account debit to goodwill account. हमने goodwill किसे write off कर दी? Continuing partner को. So continuing partner को आप क्या करोगे? Debit करोगे. So here we will write continuing partner. Now रिटायरिंग पार्टनर इज घनश्याम. ओके, घनश्याम रिटायर्ड हो रहा है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन होंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर विल बी राम एंड श्याम. ओके, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट श्याम्स कैपिटल अकाउंट debit to goodwill account. Now here we have to write off goodwill between continuing partner in their new profit sharing ratio. हमें दोनों continuing partner को new ratio से goodwill क्या करनी है? write off करके देनी है. तो in this question new ratio is not given. new ratio हमें नहीं दिया गया है. Okay. Now here what will be the new ratio? Now new ratio will be, old ratio था, old ratio was 3:2:1. Okay, old ratio of Ram, Shyam and Ghanashyam was 3:2:1. Now Ghanashyam
इज गेटिंग रिटायर्ड, घनश्याम बिजनेस से रिटायर्ड हो चुका है. ओके, सो न्यू रेशियो ऑफ राम एंड श्याम विल बी 3:2. ओके, ये पार्टनर रिटायर्ड हो चुका है, सो दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो होगा 3:2. ओके, सो नाउ वी विल write off goodwill of rupees 90,000 between Ram and Sham in the ratio of 3:2. 3:2 means 3/5, 2/5. So $54,000 for Ram. Here we will write 54,000 for Ram and 36,000 for Sham. And amount of goodwill will be 90,000. Okay. So हमने गुडविल को क्या कर दिया है, यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया है कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में. Now we will show the effect of both journal entries in partners capital account. Okay, दोनों जर्नल एंट्री का इफेक्ट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे शो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट to Ram's capital, Sham's capital and Ghanasham capital account. Now here capital account is credited. Capital account को हमने क्रेडिट कर दिया है. Okay, so in capital account credit side we will write by capital आप क्रेडिट कर रहे हो, so goodwill डेबिट होगा. So here we will write by goodwill account Ram 45,000, Sham 30,000 and Ghanasham 15,000. Okay, so here we have raised the goodwill. हमने goodwill को valued किया है, raise किया है among all partners in their old profit sharing ratio. Now second journal entry is Ram's capital account, Sham's capital account to goodwill account. Now here we have written off goodwill. हमने goodwill को write off किया है continuing partner के बीच में. So here capital account of both partner is debited. Capital account को हमने debit किया है. Okay, so in capital account debit side we will write to goodwill account. Here we will write to goodwill account. We have written off goodwill between Ram and Sham. So Ram 54,000 and Sham is 36,000. Now adjustment number 5, the amount payable to retiring partner to be transferred to his loan account. Now this adjustment we will solve after closing profit and loss adjustment account. As and when we will get profit and loss, we will transfer that profit and loss to partners capital account and we will close the capital account of retiring partner and we will make the payment to the retiring partner. Okay, so ये adjustment हम बाद में solve करेंगे devaluation account को close करने के बाद. Okay, now all adjustments are over. Now we will do posting of liability and asset side. We will do posting of balance sheet. Okay. Capital of Ram, Sham, Ghanasham, it will be transferred to partners capital account credit side. So here we will write by balance brought down. Ram 1,20,000. Sham 90,000 and Ghanasham 60,000. Next is creditors, bills payable, loan. These are liabilities for the business. Okay. So here we will write creditors
amount is 22,000. We'll write this amount in outer column. Next is bills payable. Amount is given 12,000. And next is loan. Amount of loan is given 50,000. Now we will do posting of asset side. First is bank. We will transfer bank account in asset side. Here we will write bank in inner bracket. This is called inner bracket. Amount of inner bracket of bank is 54,000. Okay. Now here we are not making any payment to the retiring partner on continuing partner in cash. Okay. और बैंक हम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को लोन से पेमेंट कर रहे हैं. ओके. सो देयर इज नो कैश पेमेंट or there is no check payment to the retiring or continuing partner. Okay. So straight away we will show the amount of bank column in outer column. Okay. बैंक बैलेंस का जो भी टोटल है वो हम outer column में लिखेंगे. ओके. क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को ना तो हम कैश दे रहे हैं ना तो उसे चेक पेमेंट कर रहे हैं. ओके. सो यहाँ पे हमें बैंक के अंदर ना तो एडिशन करना है ना तो सब्सट्रैक्शन करना है. ना तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा ना तो वो कम हो जाएगा. इट विल रिमेन एज इट इज. वो वैसे के वैसा रहने वाला है. ओके. सो आवर बैंक बैलेंस इज 54,000. नेक्स्ट इज डेटर. देयर वाज एडजस्टमेंट ऑन डेटर. बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट था. ओके. So posting of balance sheet is over. We have posted balances of liability side and asset side in balance sheet. Okay. Now we will solve. First of all, we will close profit and loss adjustment account. Okay. Profit and loss adjustment account को हम close करेंगे. Now here total of credit side is greater than debit side. Profit and loss adjustment account का credit side का total ज्यादा है, debit side का total कम है. Okay. So हमारा income ज्यादा है. So total of credit side is 18,000. 18,000 is the total of credit side of profit and loss adjustment account. Minus total of debit side is 7,500. Okay. So difference is 10,500. That will be the profit. Okay. हमारा profit है 10,500 rupees. So here we will write to partners capital account. Partners capital account, and in bracket we will write profit. Now this profit will be distributed. Profit of rupees 10,500 will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. Okay. So ये profit हम तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्ट पार्टनर इज राम, सेकेंड इज श्याम एंड थर्ड पार्टनर इज घनश्याम. In their old profit sharing ratio. Okay. So 10,500 is the profit of the firm. Okay. So it will be distributed among three partners in the ratio of 3/6, 2/6 and 1/6. Okay. So we will do rough calculation. 10,500 into for Ram. 10,500 into 3/6. Okay. For Ram it is 5250. For Sham 10,500 into 2/6. $3,500.
and for Ghanasham 10,500 into 2 upon 6. Okay, ratio of Ghanasham is 1 upon 6. So 1750. Okay. So profit of Ram is 5250. Profit of Sham is 3500. And for Ghanasham it is 1750. So total profit is 10,500. Total of profit and loss adjustment account is 18,000. Now this profit will be transferred to partner's capital account credit side. Okay. So in credit side of capital account we will write by profit and loss adjustment account. Five two five zero 3,500 and 1,750. Okay, now we will solve last adjustment, that is adjustment number 5. The amount payable to retiring partner is Ghanasham, to be transferred to his loan account. Okay, now हमें लोन अकाउंट से रिटायरिंग पार्टनर को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसकी ड्यूज को सेटल करना होगा. ओके, सो फर्स्ट वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर घनश्याम. ओके, नाउ हियर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है. इट इज 76,750. So here we will write टू रिटायरिंग पार्टनर को हमें लोन से पेमेंट करना है. ओके, पूरा अमाउंट हम उसे लोन से पे कर रहे हैं. ओके, so here we will write to Ghanashyam's loan account. $76,750 डेबिट में कुछ भी बैलेंस नहीं है, सो एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा उससे 76,750. ओके, now that much amount of 76,750 is payable to the Ghanashyam by the way of loan. ये अमाउंट फर्म क्या करेगा, न्यू पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर फ्यूचर में घनश्याम को लोन के जरिए पे करेंगे. सो इट इज लायबिलिटी फॉर दी कंटिन्यूइंग पार्टनर. ये कंटिन्यूइंग पार्टनर की क्या होगी, लायबिलिटी होगी, क्योंकि उन्हें ये अमाउंट क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को लोन से पे करना है. सो हियर वी विल राइट इन लायबिलिटी साइड वी विल राइट घनश्याम्स लोन अकाउंट और घनश्याम्स लोन अमाउंट इज 76,750. Okay, now we will close capital account of continuing partner के capital account को हम close करेंगे. First of all we will close Ram's capital account. Now here also दोनों पार्टनर की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है. ओके, सो क्रेडिट साइड के टोटल को हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट के. राम 1,00,000
1,60,250, sorry, 1,70,250, and for Sham it is 1,23,500. Okay. Now we will find out balance. We will get balance in partners capital account debit side. Capital account के debit side में हमें क्या मिलेगा? Difference मिलेगा. Okay. So that will be closing capital. So here we will write 2 balance carried down. ये continuing partner का balance होगा capital account का. So 1,70,250 minus 54,000. Okay. So balance will be 1,16,250 for Ram. Total of capital account of Ram is 1,70,250, and for Sham 1,23,500 minus 36,000. So balance of Sham will be 87,500. 87,500. Total is 1,23,500. Okay. Now both closing balances of both partner, दोनों partner की जो भी closing balances है, it will be transferred to liability side of the balance sheet. Okay. So here we will write partners capital account or partners capital. Ram 1,16,250. Okay, 1,16,250, and Sham amount is 87,500. Okay. Now we will do the total of partners capital account. Is 2,03,750. Now total of balance sheet we will do. First of all we will do total of liability side of the balance sheet. Now total of liability side of balance sheet is 3,67,500. Okay. Here we will write total. Now we will do total of asset side of the balance sheet. Total of asset side of balance sheet is also 3,67,500 rupees. So here we have tallied both sides of the balance sheet, liability side and asset side. Okay. Total of liability side is equal to total of asset side. So this question is tallied now. Okay. Now here we have solved, up to now we have solved 2 unsolved question, okay, and 6 solved question from our BK textbook. Okay. So total 8 question we have solved of retirement of partner. Okay. Now further we are going to solve 4 question of retirement of पार्टनर. ओके. सो हमारी प्रैक्टिस अब क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी. धीरे धीरे आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ. ओके. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन.